आपको सुनना है और कुछ कुछ बातों को थोड़ा ध्यान में रखना है, बिकॉज आई विल बी आस्किंग क्वेश्चंस, विल बी सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स। तो बिना नोट्स के भी आपको आना चाहिए, है ना? तो देयर विल बी सर्टेन पॉइंट दैट आई विल आस्क यू गाइस टू कंसंट्रेट ऑन, है ना, या फिर उसको याद रखिए, तो उसको हम लोग यूज करने वाले हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स वर डन एंड वी हैड टू डील विद द कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। प्लीज राइट द हेडिंग, compounds of transition elements. We have to study two compounds. A1 is K2Cr2O7, that is potassium dichromate. The other one is KMnO4, potassium permanganate. Potassium permanganate. Okay. So first of all, we'll learn about potassium dichromate, then potassium permanganate. Now, in potassium dichromate, the first topic that we have to deal with is the method of potassium dichromate. That is K2Cr2O7. Now, method of preparation में you have series of reaction in which there are three reactions, और उस those reaction please redo it 3 or 4 times. ठीक है? So method of preparation you have to just write the reactions from NCERT. In that there is no much detailing. एक detailing है बस, वो हम आपको बता देते हैं from NCERT. तो ये तो basically whatever is in NCERT you have to just rewrite it. There are three, ना? तो 3 steps को 2 2 3 3 बार लिखिएगा, then you will be able to memorize it. उसमें और कुछ नहीं आप कर सकते. There is no, I mean there is no like shortcuts अंदर. Important point जो आपको याद रखना है, in between the method of preparation you go from chromate, that is CrO4 to negative, and you make Cr2O7 to negative. That means we go from chromate to dichromate, and this happens in acid medium. So going from chromate to dichromate, it is in acidic medium. From dichromate to chromate, you have to give basic medium in order to go from dichromate to chromate. This is chromate, one chromium na chromate, and this is dichromate because two chromium atoms. Dichromate. Now chromate ion is again yellow in color, and dichromate is orange in color. So they will ask what will happen if I add acid in chromate, in potassium chromate or sodium chromate. Then you will say that it will form chromate which is going to be orange in color. What change would you observe when I add base to dichromate? And you will say that it will convert to chromate which is yellow in color. The color change from orange to yellow. So this is an important point that we have to remember. This is discussed in the method of preparation itself. मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये पॉइंट जो है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट विद रिगार्डिंग की जो भूल सकते हैं आप, छूट सकते हैं आपसे, विच इज क्वाइट इजी टू रिमेंबर, है ना? दैट विल बी आल्सो 1 मार्क्स. और जो एनसीईआरटी में जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन के रिएक्शंस है, दोस रिएक्शंस आर ऑल 1 मार्क्स, बट होपफुली दिस इज इजियर टू रिमेंबर. Next point regarding the potassium dichromate is the structure. For structure also you have to remember two things. Structure में आपको chromium double bond O, double bond O negative and O negative. This is the structure of chromate ion, which can be also shown like this. Chromium, which has 3 bonds with oxygen. By the way, all of these bonds are going to be equivalent because of resonance. And there is an overall charge of 2 negative. Now, this chromium ion
This is tetrahedral. Now, next thing is the dichromate ion. Dichromate ion, excuse me. For chromate, for chromate, one chromium atom needs 4 oxygen. But in dichromate, if you can see, there are 7 oxygen. So one oxygen will be shared by the 2 chromium atoms like this. Chromium, oxygen, chromium. Oxygen, 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 oxygen. यहाँ पे 2 नेगेटिव, ठीक है. और to make the double bond single bond structure, it will be like this. Cr, oxygen, Cr. Now, C oxygen पहले डाल दीजिए. When oxygen is making double bond, it is going zero charge. 2 नेगेटिव है, that means this chromium atom इनमें से एक chromium के पास क्या होगा, O नेगेटिव होगा. इसमें भी एक O नेगेटिव डाल दीजिए, and the other will be double bond O, double bond O, double bond O, and double bond like this. ठीक. So these are the structure of chromate, and this is the structure of dichromate. Now, structures are also important. Here also, by the way, this chromium is also tetrahedral in shape. ठीक है. This chromium atom, it is also tetrahedral in shape. दोनों में tetrahedral. All of these things are important. ठीक है. They can also give you this particular shape, and they will ask you what is the color of chromate. So आप याद रखना that this is chromate and it is yellow in color. But dichromate, it is going to be orange in color. Fine. ध्यान सुनिए. Now the important point is the chemical properties. यहाँ पे अब आपको समझने की चीजें हैं. ठीक है. Initially there are few points that are just some summarizing properties. Chemical properties. This is very important. First point, Cr2O7 and Na2Cr2O7 are strong oxidizing agents. Second point, sodium chromate Cr2O7 is highly soluble, and therefore it is used as reducing agent mostly. Therefore, just give me a second. Therefore, used as oxidizing agent. If Na2Cr2O7 is very soluble, that means it can also very easily dissolve moisture in itself, and that is why its concentration change हो जाती है. But K2O7 is not very soluble, that is why K2Cr2O7, its concentration with time उतनी change नहीं होगी because it cannot absorb water very easily. It is used as primary standard in volumetric analysis. In volumetric analysis. Now, certain points जो आपको याद रखने हैं. अब इसके बाद application point. एक how the Cr2O7 2 negative, it acts as an oxidizing agent. Now Cr2O7 2 negative chromate ion, if it is going to oxidize others, that means dichromate ion with itself get reduced, and it gets like this. It gives Cr3 positive and 2 chromium to 2 Cr3 positive, and you can see that there will be a change of 3 oxidation state chromium atom, that is by 6 electrons. एक बार इस reaction को देख लीजिए. This is important. ठीक है. Continue. Now, in all the oxidation reaction that we're going to study in this class, chromium will be getting reduced, and this reaction will be followed for chromium. So first example I am taking, if I have to go from iodide ion, so what happens if I add potassium dichromate into iodide? It converts iodide to iodine.
ठीक है, तो ये I नेगेटिव से आता है, राइट। You have to remember this one, that potassium dichromate, it oxidizes iodide ion to iodine. Now, how to write the reaction for this? I negative gives I2. First of all, tell me, are the atoms balanced? Yes or no? Are the atoms No, in sir. the reaction? No. So, what do we need to do? What change we need to do? Tell me. Add 2. Where? I. In the iodide. Yes, correct. Okay. I hope you can see that this is oxidation. वैसे भी I mean the dichromate ion is going to oxidize. अब इस Yes. oxidation में how many electrons are lost? Hmm? How many Sir, can electrons you are lost? repeat the question? How many electrons are lost in this particular oxidation? Oxidation is lost electrons, so how many electrons are lost? नहीं पता. What is the change in oxidation state for iodine? What is the change in oxidation state for iodine from reactant to product? I think this is a very similar case of electrochemistry में भी हम ये सारी चीजें करते थे. बताइए बताइए जल्दी बताइए यार, ये तो आना चाहिए. अरे what is the oxidation state of iodine in the reactant? What is the oxidation state of iodine in the reactant? जल्दी बोलो भाई. नहीं पता. My 2 -1. And in iodine? In plus I2? 1. +1 नहीं, 0. एलिमेंटल स्टेट. अरे भाई Oh, एलिमेंटल स्टेट में तो 0 रहेगा ना. yes. यार ये सारी चीज आनी चाहिए. ओ माय गॉड, व्हाट हैपेंड गाइस? सिद्दीका, खदीजा, यहिया. -1 से 0 for iodine. And how many? 2 iodine. That is by 2 electrons. What? क्रोमियम कौन सा रिएक्शन करेगा बताओ जरा. का रिएक्शन बताओ. व्हाट रिएक्शन विल द क्रोमियम डू? बोलो भाई. लिखा हुआ है यार स्क्रीन में. माइक ऑन बोलिए. Reduction. What is the reaction that the dichromate ion will do in this case? When it is going to oxidize iodide ion to iodine, it will get reduced. What is the reduction reaction of dichromate ion? It is written in the screen. Reduction of dichromate. देखो बताओ. Cr. यही नहीं दिख रहा है आपको? यही एक से पूछते हैं. मरियम मरियम तो खैर कुछ कुछ बोल रही थी. यही नहीं दिख रहा है आपको रिएक्शन? माइक ऑन कीजिए. माइक ऑन कीजिए जल्दी. माइक ऑन करो यार. कुछ बोलोगे नहीं तो ये हम पूछना पड़ रहा है. एक बच्चे से तो बोल रहे समझ में नहीं आ रहा है. खदीजा सिद्दीका, माइक ऑन कीजिए प्लीज. What does dichromate do to iodide ion? बोलो. It converts iodide to iodine. It converts. बोलो. It converts. Iodide to iodine. That means if I add dichromate into iodide, what I will get? What will I get? Iodine. तो कुछ तो डाइक्रोमेट के साथ भी हो रहा होगा ना. If iodide ion is getting oxidized, what did I say? क्या कहा हमने? If iodide ion is converted to iodine, if iodide is oxidized, क्या कहा हमने? If iodide is Oxidized to iodine. so dichromate will Reduce. get reduced. What is the reduction reaction of dichromate? अगर डाइक्रोमेट किसी को ऑक्सीडाइज करता है तो उसके साथ रिडक्शन होता है. व्हाट इज द रिएक्शन? Cr2O7 2 बोलो ना भाई, जोर जोर से बोलो ना. मरीन जल्दी बोलिए ना प्लीज. जल्दी बोलिए. क्या Cr2O7 2 minus plus 6 electrons बोलो ना. बोलो, कंप्लीट करो. फ्लो gives जल्दी to बोलो. chromium थैंक यू. ion.
ये तो हम बताए थे यार, यही तो इंपॉर्टेंट था, यहीं पे हमने रोका हुआ था स्क्रीन, इसको देख लो एक बार। Whenever dichromate is going to do oxidation, it is undergoing reduction, and in the reduction it is going to use 6 electron get converted to 2 Cr3 positive. Does it make sense, हाँ या ना? बोलो। Yes, sir. याद रहेगा अब? Yes, yes. थैंक यू। चलिए बोलिए। टर्न योर माइक ऑन, कीप योर माइक ऑन गाइस, प्लीज कीप योर माइक ऑन, तभी याद आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। खदीजा योर माइक इज नॉट ऑन यार, इतनी देर से हम बोल रहे हैं माइक ऑन करने, तभी माइक ऑन नहीं है आपका। हाँ बोलो, रिएक्शन बोलो सब कोई। क्रोमियम के लिए बोलो Cr2 Cr2O7 2 minus plus 6 electrons gives 2 2 chromium. chromium. 2 Cr3 positive, 2 Cr3 positive. Three Now please positive. remember the electrochemistry chapter. Electrochemistry chapter में इस तरह के होते थे ना, oxidation reduction, oxidation reduction. Do you guys Yes, remember sir. this? Yes or no? What is the Yes, next sir. step? We equalize the electron. हाँ या ना? अरे Yes, बोलो। Yes, How sir. do we equalize the electron? बताइए क्या करें इसमें? The first reaction into 3. And second reaction into? It's 2. No, कुछ नहीं, 6 कुछ only, नहीं, yeah. नहीं sir, कुछ 6 नहीं। करें। हाँ, सेकंड को कुछ नहीं करना है, सेकंड विल बी एज इट इज ना। Yes, Yes. sir. चलिए, now once we have multiplied 3, it will be 6, this will be 3, and this will be 6. So 6 electron and 6 electron will get cancelled, हाँ या ना? Yes. अरे Yes, make sir. sense। हाँ बोलते रहो yes or no। What is the overall reaction now? Tell me। Overall 6 reaction क्या हो गया? 6I minus 6I minus plus Plus Cr2O7 minus Cr2O7 2 negative gives gives 3I2 I2 C iodine plus plus 2 2Cr3 plus. is the reaction balance? देखिए एक बार। Yes, sir. Yes, Yes. sir. क्या यस सर? भाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ है? ऑक्सीजन। Yes, sir. नहीं हाँ फिर। No, sir. So now see, next step is to balance the charges. What we will do, first of all, we are going to balance the electron. Then we are going to balance the charges. How to look at the charges in the reactant and the product? ध्यान सुनिए जरा। Iodine has a negative charge. What did I say? क्या कहा हमने? Iodine has a negative Iodine has a charge. negative charge. And how many iodide ions are there? 6. 6. So it will be overall minus 6. Dichromate has 2 negative, and how many dichromate? Only one, so it will be minus 2. Iodine, it does not have any charge, so 3 into 0, 0. The chromium, it has 3 positive charge, and there are 2 chromium, that means it is 6. Makes sense, yes or no? Please tell me. Yes. Yes, Yes. sir. This will be total of minus 8, this will be total of plus 6. Now एक बात बताइए, this reaction it is happening in acidic medium or basic medium? Basic. This reaction is happening in Basic. acidic medium or basic medium? Basic. No, never. If you have dichromate ion, it can only exist in acidic medium, because जैसे ही आप dichromate में base डालेंगे, it will become chromate. Make sense, yes or no? Yes, Yes. sir. Yes, sir. So this reaction is happening in which medium? Acidic. Acidic medium. In acidic medium, you can add H positive. What you can add? Redox reaction याद आ रहा है आप लोग को 11th standard का? Yes. Yes, sir. What can we add in acidic medium? We can add H positive. Where should we add H positive? तो ध्यान रखिए, हम पूछेंगे नहीं आपसे, आप लोग गलत गलत बताइएगा। हम क्या कहेंगे यहाँ पे, ध्यान से सुनिए। In acidic medium, you will add H positive. Add H positive where there is less positive charge, less positive charge, less positive charge. आई बात समझ में? Yes. Where should we add H positive in order to balance the charges? कहाँ पे ऐड करेंगे? जहाँ पे Less. less positive. So now tell me, in reactant or product कहाँ पे ऐड करें? Reactant. Reactant. And how many H positive should we add in order to balance the charge? Balance the charge मतलब plus 6 करना है। हम्म सभी सुनो, सब सुनो, सुनो सब सुनो। If Q is same
पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। दैट मीन्स रिएक्टेंट में पॉजिटिव है, प्रोडक्ट में भी पॉजिटिव है, रिएक्टेंट में भी नेगेटिव और प्रोडक्ट में भी नेगेटिव। अगर इस तरह का केस आ गया, चार्जेस जो है अनबैलेंस चार्ज जो है दोनों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव नेगेटिव है, बात समझ में क्या बोल रहे हैं हम? अरे बोलो। Yes, sir. देन डिफरेंस ले लेना है, ठीक है। इफ पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव आया है देन ऐड, सम कर लेना, ठीक है ना। सम का मतलब साइन बना दे ऐसे वाला, ठीक है। अभी कौन सा केस है बताओ, पहला या दूसरा? प्लस प्लस मतलब ये वाला केस है, Second one. सेकंड वाला Second केस है। case. तो 8 + 6, 8 + 6 बोलो। 8 14 + 6 14, तो 14 14. इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना, ठीक है ना। प्लस 14H पॉजिटिव है ना, -8 + 14 विल बी 6, हाँ या ना बोलो। अरे आ गया, Yes, sir. Yes, sir. yes ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ यू विल ऐड 7H2O, नाउ एवरीथिंग इज बैलेंस। बाकी देखिए दिस इज द रिएक्शन यहाँ पे ना, ये दिस इज द रिएक्शन, ठीक है। 14H Yes, हमने sir. अलग से डाल दिया है। चलिए ओवरऑल एक बार लिख देते हैं, होपफुली नेक्स्ट टाइम हमको नहीं लिखना पड़ेगा। 6I नेगेटिव प्लस Sign 3R2O7 2 नेगेटिव प्लस plus 14H पॉजिटिव गिव्स 3 आयोडीन प्लस 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O। अब ये रिएक्शन आपको ऐसी सिर्फ दिस रिएक्शन इज गिवन इन द एनसीईआरटी। वो बोलता है कि आयोडाइड आयन गेट्स कन्वर्टेड टू I2 एंड डायरेक्टली दिस रिएक्शन इज गिवन। रटते रहिए बैठ के इसको आप। इस तरह के और रिएक्शंस है ना, अकेला रहता तो रट भी लेते। मल्टीपल रिएक्शंस आर देयर, कैसे याद होगा? याद करना ही नहीं है। यू हैव टू डू द इक्वेशन, यू हैव टू डू द केमिकल रिएक्शन, है ना। आप जब इसको 2 बार 3 बार करिएगा, ये तो याद करने के लिए बैठा नहीं जाता होगा ना। 6I नेगेटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव गिव्स 3I2 प्लस 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2 6I नेगेटिव प्लस Cr2O7 2। ये कौन करता है भाई? व्हाटएवर वी डिड राइट नाउ ना, इसको आप 2 बार 3 बार कीजिए एंड देन यू विल गेट अ सेंस, एंड देन स्लोली आपको ना कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आप रिएक्शन लिखने लगिएगा। बात समझ में आ रही है हाँ या ना बोलो? yes sir. ठीक है, एक बार थोड़ा समझ लीजिए क्या हो रहा है, क्योंकि अगला रिएक्शन आपको खुद करना है। खुद करना इन द सेंस हम पूछते जाएंगे, आप बताते जाइएगा। हो गया? देख लिया आप लोगों ने? yes sir. चलिए बताइए व्हाट इज दिस रिएक्शन? कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा बताओ? Fe2 पॉजिटिव टू Fe3 पॉजिटिव, लॉस ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 1 1 इलेक्ट्रॉन। एंड व्हाट इज द रिएक्शन डन बाय डाइक्रोमेट? डाइक्रोमेट कैसे रिएक्शन Cr2O7 2 minus plus 6 प्लस Plus 6 electron. electrons give gives 2 Cr. Cr3 plus Plus. अब क्या करें अगला? नेक्स्ट क्या करना है बताओ? Balance करना है. Multiply कैसे with बैलेंस करें? Into 6 कर दीजिए. multiply the I first into by मल्टीप्लाई द फर्स्ट बाय 6 6. 6, ठीक है। तो ये यहाँ पे 6 6 एंड 6, 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। अब बताइए जरा। 6 Fe2 Fe2 plus 6 Fe2 plus plus एक Cr2 सेकंड। plus Cr2O7 2 Cr2O7 2 minus अरे अरे भाई 6 प्लस प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव, फिर गिव्स gives 6 gives Fe3 plus 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 2 2 Cr3 Cr3 plus plus अब क्या करें बताओ? balance 2 plus no 6 12 plus चार्ज 2 बैलेंस यहाँ पे प्लस 12, यहाँ पे दिस इज -2 है ना, -2 sir. minus -2 यहाँ पे 12 12 यहाँ पे, plus
and sir. 12 18 18 sir. 18 plus 3 तो 2 6 यहाँ पर 6. 6 ठीक है, ओवरऑल कितना हो गया? यहाँ पर 10 हो जाता है प्लस 10 10 एंड हियर 24. प्लस 24। दोनों तरफ पॉजिटिव, तो क्या करना पड़ेगा बताओ, ऐड करें या डिफरेंस लें? difference डिफरेंस। और किधर? 14 हाँ, प्लस 14, प्लस 14 H पॉजिटिव। हाउ मेनी वाटर? 7H2 7 आसान हुआ रिएक्शन? yes यस सर। दुआ कीजिए मेरे लिए, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए मेरे लिए। कर लिया दुआ? जी सर। थैंक यू वेरी मच। अब इसी तरह से ना आपको क्या करना होगा, SN2 पॉजिटिव टू SN4 पॉजिटिव, सेम चीजें हैं, ठीक है, SN4 पॉजिटिव। सिमिलरली यू डू द सेम थिंग फॉर H2S2 सल्फर। कीजिएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन वगैरह को तो बस देख लीजिएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, वाटर ऐड करने टाइम याद रखिएगा, ठीक है। दैट्स द ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। बाकी सब कुछ हो जाएगा वैसे जैसे हम लोग ने किया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर द डाइक्रोमेट का, देन यू नीड टू रिमेंबर हाँ, then you need to remember what, then you need to remember the Fe2 plus, if it is getting oxidized तो किसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है? stannous से stanic, है ना, this is stannous, 2 positive stannous, this is stanic, then sulfide to sulfur, iodide to iodine, इस तरह से आपके पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी यूज्ड, इन सब का आइडिया आपको होना ही चाहिए, बिकॉज आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो चुकी है ना, इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हैव डन सिमिलर थिंग्स, राइट। अब इन दोनों का कीजिएगा, फिर प्रॉब्लम आई तो हमको मैसेज कीजिएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोटेशियम डाइक्रोमेट। नेक्स्ट सुनिए जरा पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में। सर आप मुझे ये 14H प्लस और 7H2 प्लस फिर से सिखा सकते हैं क्या? मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हाँ हाँ ठीक है। हाउ सी, देखिए, वी कैन ऐड वाटर, एक आप ये समझ लीजिए जैसे हम H प्लस डाल रहे हैं वैसे यू कैन ऐड वाटर। So in order to balance the hydrogen and oxygen, we add water. And how many water molecules should we add in order to balance 14 H positive and 7 oxygens are there ना? तो कितना बैलेंस करना पड़ेगा? 7 H2O। देखिए समझ में आया अब आपको? In order to balance the 14 H positive, ठीक है, पानी डालना पड़ता है, right? It is not going to be necessarily 14 H positive in all the cases, ध्यान रखिएगा, okay? है। ओके सर। तो ठीक है, 14H रटना नहीं है। पॉजिटिव कांस्टेंट हर वक्त नहीं आएगा। 14 सॉरी, व्हाट चाहिए? 14H पॉजिटिव हर वक्त नहीं आएगा, कोई दूसरा नंबर क्या है? हाँ, हर वक्त नहीं आएगा, दूसरा नंबर भी आ सकता है। यू हैव टू बैलेंस द चार्जेस। अगर 14 H प्लस आता तो हम सीधा बोलते कि 14 H प्लस लिखो हमेशा, ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी, फाइन, ठीक है। यस सर। थैंक यू वेरी मच। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हियर यू हैव थ्री मेथड ऑफ प्रिपरेशन दैट जो आपको फिर से वही एनसीईआरटी से कीजिएगा। फ्रॉम pyrolusite ore, another method of preparation is commercial MOP, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल बोल लीजिए। अदर वन इज लैबोरेटरी मेथड। क्वेश्चन में क्या लिखा था? सर्टेन प्रॉपर्टीज में कुछ कुछ आप ले लीजिए, फॉर एग्जांपल व्हाट प्रॉपर्टीज, there are, in the method of preparation you will come across this particular compound that is known as potassium manganate, K2MnO4, which is green in color। और जो पोटेशियम पर मैग्नेट है KMnO4 is purple in color। ये इंपॉर्टेंट है, KMnO4 if you heat it, it is going to get dissociated into K2MnO4 plus MnO2 and O2। I think
add 2, it will get balanced. Next point is quite important, that deep purple color of KMnO4 is due to charge transfer from oxygen to manganese. This is known as ligand to metal charge transfer. Known as ligand metal charge transfer. Now, next, by the way, ये important क्यों है? Because MnO4 negative, if you calculate the oxidation state, it is in +7 oxidation state. That means it does not have any d electrons. So dd transition इसमें नहीं होता है. We do not have any dd transition, जिसकी वजह से आपके पास कलर है. There is another phenomena, that is ligand to metal charge transfer. Now this is not present in NCERT, but this was present in the CBSE sample paper. ठीक है, उस वजह से ये बस important. Another thing is the structure. So Mn, we have to see both the structure for magnet and permanganate. So in magnet we have negative charge, so 2 oxygen with double bond and 2 oxygen with negative charges. This is magnet. Which is MnO4, 2 negative, and here we have manganese, which is permanganate, in which only one atom is having a negative charge. So O double bond O will, Mn double bond O will be in 3 of the cases, 3 of the oxygen atoms, और एक में negative charge होगा. This is permanganate. MnO4 negative. Fine. अब वापस से वही इसका केमिकल प्रॉपर्टीज. Sir, can you scroll up a bit? इसमें चलिए, हाँ, एक और चीज भूल गया थोड़ा सा. This is also tetrahedral. स्क्रीनशॉट ले रहे हैं क्या आप, मरियम? No, I didn't write the last line. Sorry. लिख रहे हैं आप? कैसे लिख रहे हैं भाई? लिखना नहीं है वैसे आज. Oh. You can write. I'm done. Number oxidizing properties. So oxidizing properties in acidic medium. यहाँ पे you have to learn 2 mediums, एक acidic medium में और एक alkaline या basic medium में. ठीक है. In acidic medium, what is the reaction? सबसे पहली बात तो आपको जानना है, what reaction does MnO4 negative undergoes? Like उसका जो whatever reduction is happening, how many electrons are used, and what is the MnO4 negative plus 5 electron, it gets converted to Mn2 positive. In what? In acidic medium. ठीक है. In acidic medium, MnO4 negative से 2 positive. अब इसमें बाकी सब वही चीज. There are more reactions here. I negative से I2. अच्छा, एक बात, Fe2 positive, which is green in color, से Fe3 positive, which is yellow brown type का color होता है, yellow color. C is important. COO negative, that is oxalate ion. CO negative या ऑक्सैलिक एसिड भी हो तब भी चलेगा. 2 कार्बन डाइऑक्साइड. हाइड्रोजन सल्फाइड 2 सल्फर. NO2
2 NO3 negative, SO3 2 negative, 2 SO4 2 negative. ठीक है, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड। इसमें से आपको जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा दैट विल बी ऑक्सलेट आयन। ठीक है, ऑक्सलेट आयन या ऑक्सैलिक एसिड टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लेट मी show you how this reaction will be balanced. So first of all, I will write the reaction of oxalate. So it is basically there are two carbons, so C2. There are 1, 2, 3, 4 oxygen, so O4, and it is having a 2 negative charge, which is getting converted to CO2. अब ये बताइए, now I will write 2 CO2. The carbons are balanced. Yes or no, please tell me. Yes. अब ये बताइए, what is the Yes, change sir. in oxidation state of carbon from oxalate to oxalic acid? Sorry, from oxalic acid to carbon dioxide. What is the change in oxidation state? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए कार्बन का। Is it 2? तुक्का मार रहे हैं क्या आप मरियम? No. इफ यू हैव कैलकुलेटेड तब तो आपका इज इट नहीं आना चाहिए ना, यू शुड हैव अ कंफर्म आंसर। डिड यू कंसीडर नेगेटिव चार्ज? You're asking and I calculated. नॉट CO2, you. no, not CO2, CO2 negative. In CO4 2 negative, what is the oxidation state of carbon? CO4 2 negative बोल रहे हैं, C2O4 2 negative. देखिए जरा, 2x plus 4 into minus 2 is equal to minus 2. 2x plus minus 8 is equal to minus 2. 2x is equal to 8. X 8 minus 2. X is equal to 6 by 2. X is equal to 3. Make sense? Yes or no? Please tell me. Yes. और यहाँ पे प्लस 4 हाँ या ना? Yeah. दो ऑक्सीजन है ना, तो प्लस 4 हो गया हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes. तो both the oxygen atom is undergoing a change of one oxidation state. That means 1 electron per carbon. Total we will need 2 electrons. Make sense? Yes or no? Yes, sir. बोलो। For each carbon 1 electron. 2 carbons में 2 electrons. 2 electrons. Now अगला बोलो, अगला अगला नेक्स्ट क्या करें हम, बताओ। MnO4 plus 5 electrons. Just give me a second. MnO4 negative plus 5 electron gives, बोलो। 2 CO2 plus 2 CO2 कहाँ से रे भाई? अरे Mn2 पॉजिटिव आएगा ना? Mn2. हाँ, कहाँ है? एकदम बिल्कुल सरिया के, प्लस 2 CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ, आप क्या कर बताओ? Multiply the first one by Into 5 5. or below 1 limit. The second one 2. 2. So this will be 10. ये तो 5 होगा। 5, 8, This will be 10. 10. This will be 10. This will be 2, 2, 10, 10, 2. 2. What will be the overall reaction? 5 5 CR C2O. हाँ, 5 C2O4 2 negative. Negative plus 2 MnO4 MnO4 negative gives 10 CO2 plus 2 plus 2 Mn2. 10 electron cancel. 10 CO2 plus 2 Mn2 positive. अब क्या करें बताओ? Minus 10. Minus 10. 2 minus 2.
-2, उसके बाद 0 और इधर +2 to 4. +4 ये कितना हो गया? -12 और +4 सर। क्या करें बताओ, डिफरेंस ले या ऐड कर दें? Add. ऐड ऐड, है ना? एंड इन विच साइड डू आई नीड टू ऐड एच प्लस? प्रोडक्ट साइड नहीं, मार के मोरॉन है प्रोडक्ट सॉरी सर Reactant side. रिएक्टेड साइड हाउ मच? 8. 8 ऐड Minus. करेंगे तो 8 हो गए भाई, 12 और 4 16, है ना? यस सर। यू जस्ट नीड टू ऐड 12 एंड 4, ठीक है? Okay. ठीक है, सम करने का मतलब टेक इट एट द चार्जेस, यू डोंट हैव टू लुक एट द साइन, इवन व्हेन यू आर हैविंग बोथ द पॉजिटिव, यू डोंट हैव टू लुक द साइन, जस्ट टेक द डिफरेंस, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? +2 है, -2, मतलब -2 है, मतलब 2 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, क्या चीज का डिफरेंस है, यू जस्ट नीड टू सी दैट, ओके? Yes. ठीक है, तो एंड हाउ मच 8. वाटर? 8. 6 कहां से है भाई? 8 ना, 16H2O है तो। अब देखिए, इज इट बैलेंस, देखो जरा, नो सर नहीं जोर से बोलिएगा, यही आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आती। बैलेंस हुआ है, देखो जरा। बैलेंस Yes. है ना? चलिए, अब इसी तरह से बाकी भी आपके पास 5 मोर रिएक्शंस आर देयर, यू हैव टू डू दैट। अब सर एग्जाम इन में एल 5 में से कोई से भी आ सकता है। हाँ, कोई सा भी आ सकता है 5 में से तो, ठीक है? और पिछले वाले में से 4 में से। हाँ, किसी में से कुछ भी आ सकता है, इसमें रटने से कोई फायदा नहीं है, बस आप थोड़ा सा ये याद रखें कि कहाँ से कहाँ हो रहा है, ठीक है? और उसके बाद फिर 1 मार्क्स का ही आएगा, लेकिन है ना? तो इफ मुझे यू ये हैव डर है टाइम, कि मतलब कोई दूसरा दे दे। क्या, जोर से बोलिए या मुझे ये डर है कि कोई दूसरा दे देंगे। क्या? ये डर है कि कोई दूसरा दे देंगे, तो ये फुल प्रैक्टिस करना है अच्छे से, वो है बस। ये 4 और ये 5 अच्छे से प्रैक्टिस करना हम आपकी आवाज क्या कह रहे हैं मरियम, ये आप लोग का अगर आवाज आ रही तो बताइए जरा, मरियम। So even I can't hear. है। सो आई नेट सेइंग इनको दैट वो पूरी पढ़ना है तो अच्छी चीज है, क्योंकि फिर और कुछ भी डिफिकल्ट नहीं आएगा। अरे भाई, समझ में नहीं आ रहा है हमको, एनसीईआरटी देख लीजिएगा, उसमें यही दीज आर दी ओनली रिएक्शन विच विल कम, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ओके? ओके सर। हाँ, उसके अलावा 3 और है जो हम बता रहे हैं इन बेसिक मीडियम। बेसिक क्या, अल्कलाइन मीडियम में, बेसिक अल्कलाइन या न्यूट्रल नॉन एसिडिक मीडियम में, सेकंड पॉइंट लिखिएगा। ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ना, या प्रॉपर्टीज, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज इन अल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम।
तो इसमें MnO4 नेगेटिव जो है, it eats 3 electron and gets converted to MnO2. First one, iodine को it oxidizes to iodate ion IO3 negative. Sorry, iodide to iodate. It converts thiosulfate S2O3 to negative to SO4 to negative. Just give me a second. Third, Mn2 पॉजिटिव के अगर कोई सॉल्ट मिल जाए तो इसको कन्वर्ट कर देगा MnO2 में। अच्छा, बाय द वे, आई नेगेटिव की जगह अगर Ki मिल जाएगा तब तो घबराइएगा नहीं ना आप लोग। इंस्टेड ऑफ आयोडाइड इफ यू गेट पोटेशियम आयोडाइड तो घबरा जाइएगा क्या? खदीजा, मरियम, सिद्दीका, हर्षा, देखिया, No, sir. नहीं ना। Ki में भी तो आयोडाइड ही है। यू विल जस्ट टेक आयोडाइड आयन, उसके बाद रिएक्शन वैसे ही कर दीजिएगा। इग्नोर द के, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इफ यू इग्नोर द के। ओके, चलिए। तो एक लास्ट पॉइंट KMnO4 के रिगार्डिंग, तो नोट करके लिख दीजिएगा। दिस वाई टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाई टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत बन जाते हैं। यहाँ पे लिखेगा KMnO4 इज नॉट यूज्ड। Sir, you have to write this now. व्हाट? नहीं नहीं नहीं, लिखना नहीं है अभी। अरे हम अगर बोल देना मुझसे प्लीज राइट दिस, तो उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा आज की क्लास के लिए। यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग। टाइट्रेशंस विद HCl and it oxidizes Cl negative to Cl2। अभी देखिए, ये रिएक्शन भी आ जाए तो फिर हमको प्लीज मत बोलिएगा मास्टर तुम बताए नहीं थे यार कि क्लोराइड का भी आ जाएगा। अरे जो रिएक्शन आयोडाइड के लिए हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे फिर से वही देखिए, दिस इज हैपनिंग विद इन एसिडिक मीडियम, है ना। HCl अगर आ गया तो इन एसिडिक मीडियम व्हाट इट विल डू, जिस तरह से आयोडाइड टू आयोडीन, सिमिलरली क्लोराइड टू क्लोरीन। मेक सेंस? यस और नो, प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए आप। अगला टॉपिक है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसमें आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन बस करना है खुद से। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो देयर आर टू इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एक को बोलते हैं लैंथेनाइड्स और दूसरे को बोलते हैं एक्टिनाइड्स। देखिएगा, लैंथेनाइड्स, actinides, 14 elements following lanthanum। lanthanum 14 elements, lanthanum आफ्टर lanthanum 14 है ना, तो lanthanum की एटॉमिक नंबर होती है 57 एंड देन सीरियम which is having 58, 58 से लेके 71 तक, that is lutetium, all of these are lanthanides। actinides में 14 elements following 14 elements following actinium having atomic number of 89। actinium में thorium that is 90 to lawrencium that is 103।
90 से 103 कितने एलिमेंट्स हो गए? 90 से 103 हाउ मेनी एलिमेंट्स? यही 13। काउंट कीजिए जरा उंगली में मरियम। 90, 91, 92 ऐसे काउंट कीजिए 103 तक। कितने आ रहे हैं? 14. 14 ना, ठीक है। सबसे पहले यू आर गोइंग टू राइट, नोट राइट है ना। सबसे पहले यू आर गोइंग टू सी लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड्स में सबसे पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन दिस द 6s2 इज ऑलरेडी ऑलवेज फिल्ड। 5d में कभी कभार एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, बट 4s इज गेटिंग प्रोग्रेसिवली फिल्ड फ्रॉम 1 to 14। ठीक है, तो इन द लैंथेनाइड कौन सा सबशेल फिल होता है? 4f सबशेल इज फिल्ड। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट is +3. Regarding atomic size and ionic size, atomic size and ionic size, सबसे पहली बात, atomic size decreases from lanthanide या lanthanum to lutetium। lanthanum से लेकर lutetium तक डिक्रीज करता है ड्यू टू lanthanide contraction। As in lanthanides, the 4f subshell, the 4f subshell is filled, which has poor shielding, which has poor shielding. The Z effective increases and size decreases। एक बार पढ़िए स्टेटमेंट को, if you can understand or not understand। मेक सेंस? Yes, sir. या पक्का? पक्का sir. जिनको नहीं समझ में आ रहा है, बेसिकली Z effective is the nuclear charge, charge on nucleus, meaning positive charge. If the positive charge will increase, it will attract the valence electron, the last electron, very easily. And the attraction between the nucleus and the last electron will be high if the nuclear charge is high. If the attraction is high, the electron will be closer to nucleus and the size will decrease. Next, the decrease in size, the decrease in size of lanthanide ion is not very gradual। ठीक है, इसके बारे में से पढ़ना नहीं है। अब यहां से आपके पास सवाल आते हैं। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन ये पूरा रटने वाला चीज है, ठीक है ना।
थोड़ा आप लोग हम हेल्प कर देंगे। लैंथेनम 3 पॉजिटिव इज मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, सबसे ज्यादा कॉमन यही है ना। जनरली स्टेबल भी यही है। अच्छा, बाय द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलन? लैंथेनाइड इन जनरल। सेकंड, Ln 2 positive and Ln, that means lanthanide 4 positive is also possible. It also exists. Now, what are the elements which gives 2 positive and 4 positive? उसके लिए one thing that you need to remember, few things you need to remember ना, cerium का 4 positive is possible as it has inert gas configuration and 4F0. Fourth, europium का 2 positive is possible as it has 4F7, that is half filled. ठीक है, एक और हाफ फील्ड आएगा which will be TV4 positive is possible as it has 4F7, again what, half filled. Sixth will be YB 2 positive is possible as it has 4F14 fully filled. याद करने का तरीका देखिए, एमसीक्यूज में जनरली आएगा कि आपके पास किसका 4 पॉजिटिव किसका 2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है। तो इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर CETB इज देयर, CETY है ना। देखिए इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है आपके पास, ABCDE, उसके CUVWXY, तो ऑल ऑफ दीज इज इन अल्फाबेट, ऐसे याद रखना आपको। और क्या हो रहा है इसमें, +4 +2 +4 +2, और यहाँ से 0 से स्टार्ट कीजिए, 0 7 7 14 दिख रहा है। मरियम, सिद्दीका, हर्षा, यहिया, खदीजा, Yes, sir. हाउ टू रिमेम्बर? ठीक है, इफ यू डू द सेम थिंग 2 और 3 टाइम्स फिर आपको थोड़ा याद हो जाएगा। फाइन, मूविंग ऑन, सम जनरल प्रॉपर्टीज। Number 1, it is white, silvery, soft metal. Second, most ions are colored. Due to presence of F electrons. That is chemical reaction. So by the way, what is the most common oxidation state of lanthanide? 3+. 3+. ठीक है, ध्यान सुनिएगा जरा। If you have Ln and you have oxygen, lanthanide का क्या होगा? Valency will be 3. What is the valency of oxygen? What is the valency of oxygen? सही है, what is the valency of oxygen? 2. Very good, 2. So it will form Ln2O3 when it reacts with O2. What reacts with O2? Ln reacts with O2. Make sense है ना? समझ में आ रही बात? ठीक है, you have Ln, अरे आ रहा नहीं आ रहा, बोलो बोलो जल्दी बोलो। मरियम, Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है ना बाकी लोग को? ठीक है, Ln and halogen, Ln के लिए 3
What is the oxidation state? Sorry, valency of halogen. Valency of halogen बताओ. 1. 1. क्या बन जाएगा इससे? ln1 ln x3 है ना? When it reacts with halogen x2. Chlorine, bromine, iodine. Similarly, ln and OH negative. ln के लिए 3 और OH negative के लिए 1. We will get ln OH whole thrice. When you are going to react with water, it will be ln OH whole thrice. इसी तरह से ln and sulfur 3 2. We will get ln 2 sulfur 3, and it will be when you react this with sulfur. ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शन आएंगे तो कर लेंगे. बोलो. yes sir. Yes, sir. Now, last point regarding the lanthanide. एक का मिक्स्ड मेटल. दिस इज इंपॉर्टेंट, एक बार बोर्ड एग्जाम में आ गया था सीधा. ऑल्सो दिस इज बोल्ड इन एनसीईआरटी, बोल्ड में इसको लिखा गया है. दैट इट इज इंपॉर्टेंट. व्हाट इज मिक्स्ड मेटल? So mixed metal consists of approximately 95% lanthanide, metal, and approximately 5% iron, and traces of very less amount of sulfur, carbon, calcium, and aluminium. What is it used for? It is used for production of bullets, shells, and lighter flint. ठीक है. It is an alloy. Next we have actinides. The general electronic configuration. Seven S two, 6D021, 5F1 से 14. एक यहीं पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए. The difference in energies of 7S, 5S, and 6D is very low. Therefore, actinoids show higher range of oxidation state than lanthanoids. ठीक है. सेकंड पॉइंट लिखिएगा. Atomic and ionic size gradually decreases
due to actinide contraction. इसमें लिख लीजिएगा बस हम आई थिंक यू नो व्हाट द मीनिंग ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 5f electrons. So, general properties